हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू ग्रीनडेल। एंड आज मैं लेके आया हूँ अ न्यू ब्लॉग, अ न्यू वीडियो जिसमें हम लोग एक मिनी बॉन्साई बनाएंगे। वेलकम टू अनदर ब्लॉग और वीडियो वे विल बी मेकिंग अ स्मॉल ficus bonsai, okay, a mini bonsai. So stay tuned. If you are new to my channel, do like and subscribe. And for any suggestion or guidance, please do share your thoughts in the comment section. Okay, अब देख सकते हो ये वाला मैंने लाइव में ही बनाया था, this bonsai, mini bonsai, and it has grown really well. It has been receiving good amount of rainfall. अच्छे से बारिश मिल रहा है उसको, तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। तो आज का बॉन्साई मैं प्लान करूँगा ये टूटे हुए आर्डन पॉट में। दिस pieces of broken arden pot will be used as a base for the bonsai. This ficus tree, I'll turn it into a bonsai. This is a small sapling. I did it from cutting. So I'll use some soil, some wire, some moss will be there. Then I'll be using thermocot. That's all. These are dry moss. I'll also use some fresh moss. So stay tuned till the end. You'll have many things to learn. It's an easy process. It's totally an easy process. Each minute के अंदर within 20 minutes we will be preparing this bonsai all together. Okay. So if you have any plants that you think it can be turned into a bonsai, any tree or plant, you can just do it in this way. Okay. So पहले मैं ये ficus plant को निकाल के इसका root साफ कर लूँगा. I'll just clean its roots. I can also dip the plant in water. मैं पानी में डाल के भी roots को साफ कर सकता हूँ, but I won't be doing that because I need the soil, the minimum soil it will be holding it to its roots. मुझे ना जो मिट्टी roots में लगा हुआ होगा लास्ट अमाउंट का छोटा थोड़ा सा, वो मुझे चाहे, so इसलिए मैं पानी में डीप नहीं कर रहा हूँ इसको. So the excess roots, the overgrowths in the roots, I'll just trim them off. मैं उसको साफ कर दूँगा, काट दूँगा, and then I will be growing this in that piece of broken earthen pot. I'll also be doing the wiring, so just stay tuned and you can just check on. I made sure that that my scissors are clean, okay, before pruning or trimming the roots. मैं sanitizer use करके I just clean the scissors once. That's a very important tip that I would like to share, so that your plant don't get any infection and in the long run it doesn't get any stress because of that. So उस कारण से इसको जरूर कीजिएगा. Now I'll be using this piece of aluminum wire. I could have used copper wire also, लेकिन मेरा copper wire ज़्यादा मोटा है and या तो ज़्यादा thin है, so it will be an issue. So what I did, I used is I grabbed this piece of aluminum है. मैंने ये aluminum wire यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा copper wire ज़्यादा मोटा है और जो उससे पतला वाला वो ज़्यादा ही पतला है. So aluminum wire is also really good, easily available and it's not expensive. इतना कीमती भी नहीं होता है. So I'll start wiring. I'll start from the bottom. एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी आप bonsai wiring करते हो, whenever you're planning to wire a tree to make it a bonsai, always make sure कि you turn or you circle the wire beside the tree, okay, beside the branch or along the branch. जब भी आप वायरिंग करते हो ना प्लांट्स का या ट्री का, so you make sure, आप लोग प्लीज़ मेक श्योर कीजिए क्या कि वायर को आप लोग घुमाओ पेड़ के ब्रांचेस में, ना कि ब्रांचेस को घुमाओ. ओके, अगर ब्रांचेस घूम गए देन इन द लॉन्ग रन देयर आर चांसेस, आपका चांसेस है कि वो पौधा मर सकता है या वो ब्रांच ख़राब हो जाएगा. ओके, प्लीज़ मेक श्योर अबाउट दैट. इसको बॉन्साई फॉर्म में आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा. इट विल टेक सम टाइम to take its shape, but meanwhile I will start working on it. So I'll take another piece of wire. मैं एक दूसरा piece of wire लूँगा. इस ficus में 2 branches था. There were 2 branches in this ficus, so I have to wire the other branch too. So similarly I'll start from the bottom of the tree and I'll roll the wire as I move on. जैसे मैं ऊपर जाता रहूँगा, I'll keep on turning the wire.
इसको भी वायर को ना मैं दूसरे वाला वायर के एकदम ऊपर में लगाऊंगा, मतलब चिपका के लगाऊंगा। ओके, आई मेक श्योर दैट। सो ऐसे हम लोग टर्न करेंगे इसको। I'll keep on rolling till I reach the second branch. Okay, it's totally up to you. आपको जो भी प्लान मिले या जैसा भी शेप का मिले, without trimming, without wiring also you can do it. आप वायरिंग बिना किए भी आप बना सकते हो। ओके, जस्ट प्रूनिंग करके भी कर सकते हो। यू कैन यूज़ मैंगो सैपलिंग, यू कैन यूज़ एनी फ्रूट प्लांट का सैपलिंग, यू कैन यूज़ some common house plants too, ड्रेसिना, ficus, rubber plant, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, there is no restrictions to it and you have your best creativity for it. I'm 100% sure about that. So मैंने वो टिप को so that I don't get hurt, it's a small tree, थोड़ा बेंड कर दिया हूँ। I just bended the tip of the wire. Okay, so I'll start गिविंग शेप। और एक टिप बोलता हूँ फॉर द बोनसाई, जो भी वायरिंग करते हैं एंड हु प्लान्स टू बेंड और गिव कर्व टू योर बोनसाई ट्रीज, ऑलवेज गिव प्रेशर वेयर द वायर इज। जहाँ पे वायर है ना वहाँ पे प्रेशर दीजिएगा। जो ब्रांच में या दैट पार्ट ऑफ द ट्री जिसमें वायर नहीं है, जो प्लांट का पार्ट में वायर लगाया हुआ नहीं है, वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा मत दीजिएगा। देयर आर हाई चांसेस दैट इट माइट ब्रेक देयर। वहाँ पर चांसेस है कि वो ब्रांच वहाँ पर टूट जाए। ओके, सो ऑलवेज ट्राई टू गिव प्रेशर और मेक द कर्व इन द पार्ट where you did the wiring. Okay, so I did some minimum curves and then I'll trim off the extra part that I think is unnecessary, because ज़्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए मुझे। ये सेक्रीफिशियल ब्रांच रखूँगा जो ऊपर की तरफ जा रहा है मेरा, फिर भी थोड़ा काट दूँगा, बट आई लेट इट ग्रो एंड व्हेन द स्टेम बिकम्स बिगर या द निबारी या द कोडेक्स, जब नीचे का पार्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा ब्रांच, मैं ऊपर का ये एक्स्ट्रा पार्ट आई जस्ट कट इट एंड जो ग्रीन वाला ट्री निकल रहा है ना ये ब्रांच, उसको मैं रखूँगा। आई कीप दिस ब्रांच गोइंग। Okay, and that part I'll discard the other part and that might become another plant for me. So wiring is almost done, but जैसे ही मैं उसको रिपोर्ट करूँगा या माउंट करूँगा, that time I might have to change the shape. So this cannot be done anything. I'll use it as a base, and this piece of clay pot I'll use as the base for I'll mount the bonsai here. Okay, and as soon as I water, the water उसमें hole नहीं है, but water will deep down. Okay, वो slip कर वो नीचे की तरफ चला आएगा पानी। You can see this is how it will look like. Since ये एक ऐसा base है जिसमें मैं soil ज़्यादा नहीं रख सकता हूँ, तो as soon as I water it will just flow down. जैसे पानी दूंगा वो नीचे चला आएगा। सो इसके कारण what I'll be using moss as the base. Okay, moss को यूज़ करूँगा। So I'll take this part for now and दूसरा part को साइड में रख लेंगे। And I'll take the moss, I'll divide it. ज़्यादा भी moss नहीं चाहिए, कमती होने से भी हो जाएगा। Just check once. अगर आपके पास मॉस नहीं है then you can use cocoa fiber, you can use jute fiber, you can use cotton clothes. Make sure it's cotton. Okay, cotton clothes, yeah, anything that will decompose, yeah, in the long run it will start rotting. आप बीटल नट का कवर भी यूज़ कर सकते हो, जो असम में हम लोग तामुल बोलते हैं। You can use something like that also. So for nutrients I'm using thermopod. मैं इसको मॉस के ऊपर में ही डालूँगा so that the tree gets sufficient nutrients for its growth. Because इसमें मिट्टी कम होगा, there are less chances कि ये बाहर से मुझे nutrients मिलेगा इसको। So I put on some soil and roots में already soil है, जैसे मैंने बोला था आपको। That's the reason why I kept some soil in the roots. Roots में मैंने इसलिए soil रखा था। Okay. So I'll make it sit and I'll just see. I have to be very careful because ये टूटा हुआ clay pot या this broken piece of clay pot is not so strong.
If I give too much of pressure or strength I put on, there are high chances that it might break. So I'll use the other pieces of moss, dry moss, but this moss will also grow up for sure. There are some parts which are still alive. So इसको मैं stuck in करूँगा side में. And once I water it, no, it will grab on very well. लेकिन since it's a very क्या बोलूँ मैं, ये this piece of pot या piece of clay doesn't have any border, side border नहीं है, तो it might fall off. So इसी के कारण मैं I'll use a black thread and I'll just roll it until the roots grab on. जब तक roots grab ना कर ले इसको, okay? Ficus will grow really well. It's good season also. You can give good amount of water and it will just survive. So पूरे tree के bottom को, the whole bottom part of this bonsai, I will use the dry moss and I'll just cover it up, and with a black thread I'll just tie it so that it stays stuck to its place, it doesn't move. Okay, you can use a pot, okay, आप pot use कर सकते हो. You can use anything. You can use a small container, leftover water bottles, cool drink bottles. You can use M-seal to make your own bonsai pots or some creativity. Okay, आपको जो अच्छा लगता है you can use that. थोड़ा देखने के बाद I'm sure this is the way I want it to look. So I'll use this black thread and I'll start rolling. Since I'm making video with both the hands and also handling the camera, it becomes a bit difficult to control, but I'll try my best. बाद में मैं इसको फिर से ठीक कर लूँगा थोड़ा. So give it a good strong tie. अच्छे से बांध लेंगे इसको so that it doesn't fall off. बाकी कुछ नहीं है, ये गिरना नहीं चाहिए. Okay, I'll also put some pieces of fresh moss. मैं थोड़ा growing moss भी डालूँगा इसमें so that अभी तो रेनी सीजन आ रहा है, moss बहुत अच्छे से ऊपर में grow हो जाएगा and पूरा green हो जाएगा. मेरे पास ज़्यादा moss नहीं है, थोड़ा ही है, so I'll use only small pieces of moss ऊपर में. I'll let it grow on top naturally. So mounting is done. It doesn't look bad I guess, but थोड़ा shape में मुझे problem दिख रहा है. I'm not satisfied, so मैं इसको थोड़ा curve और इसका ये change कर रहा हूँ posture. So this is how it will look. It will sit, but still it doesn't show the shape nicely, the bonsai. So accordingly I'll make the changes. करने के बाद I will start mounting the other green moss. So that's how it will be looking. ऐसा दिखेगा ये. So let me collect my moss. So I've been growing moss in this container. So let me pull out a piece of carpet moss या cushion moss, जो भी आप बोलो. I collected it from some wall. कहीं wall से मैं इसको निकाल के लाया था. And since then, maybe 2 month का आसपास हो जाएगा this moss. So I'll cut it into small chunks. छोटे-छोटे pieces में काट लेंगे इसको. And then I'll place it. मैंने बोला था पूरा cover नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ा-थोड़ा areas में I'll just put it so that जैसे ये बड़ा होने का मतलब as it grows, जैसे ये grow करेगा, this moss too will cover up the base को cover up कर लेगा. Just need to make sure कि it stays moist. Okay, ये moist होना चाहिए. Direct sunlight से कुछ दिनों के लिए मुझे उसको संभाल के रखना होगा. Then it will grow nicely. इस moss को भी मैं रस्सी के help से just lightly tie कर दूँगा so that it doesn't fall apart. This is done. You just imagine अगर मैंने पूरा cover कर दिया होता, it would have looked really nice. But no option. You have to be as creative as you can with all the materials available with you.
So similarly with the same black thread, I'll just roll on. I'll just give it a tie so that it doesn't fall apart. I'm trying my best, but I couldn't find the best option. I'll just put a knot here, making sure that it doesn't fall off. So this is done. I tied one and the other piece of moss also मैं उसको भी tie कर लूँगा. You can see it's not a hard process. You can use anything, okay, that's available with you. You know, this is not going to be my best video, but I really wanted to document या मुझे इसको capture करना था, so that मुझे तो बनाना ही था कुछ, so that all my friends जो ये वीडियो देख रहे हैं, all my friends those who are watching this video, they too can make something in similar sort. हम लोग फेंक देते हैं बहुत सारा चीज़ें, या उसको मालूम नहीं होता है उसको कैसे और ब्यूटीफुल कर सकते हैं. So I wanted them also to try the same thing. मुझे ट्राई करना था कि वो लोग भी ऐसा बनाएं and make their garden look really awesome. So this is done. Now it's time for me to do some watering. एक मग में पानी ले लेंगे and उसके बाद उसी में डिप करेंगे. You can also use a spray can to water your bonsai, but इसको almost regularly पानी देना होगा. Okay, bonsai हमेशा flat pot में grow करता है, तो पानी का ज़रूरत इन लोग को हमेशा रहता है. So I have grabbed on my water mug, but the planter is a bit too big for me to make it get it deep in this water. So I'll also try to pour it from on top. Let's see, but I'm scared like the moss might fall off. Moss या मिट्टी निकल सकता है जो मैंने डाला है अगर ऊपर से डालूँगा. The best thing I can do is like I can just change the mug या जो कंटेनर में पानी लूँगा वो चेंज कर लेता हूँ. I'll use a bigger one and मैं उसमें I'll submerge, I'll do bottom watering. I'll just do bottom watering, and bottom watering is one of the best techniques for your succulents, for your bonsai, for your ferns, and any other flowering plant. So मैंने bottom watering कर रहा हूँ, but I'll pour some more water in it so that ये पूरा डूब जाए, so that the whole bottom part gets submerged. So pour on some more water, maybe another mug, and I think it's sufficient. So इसको हम submerge करेंगे bottom watering, and you see the moss is not floating, moss ऊपर नहीं है. That means ये बहुत अच्छे से चिपक के लग गए हैं. It got stuck to the pot very well. It did not fall apart. Nothing did come out. So this is done. Now it's time for it to sit. And मुझे देखना है कि वो कैसे दिखेगा. The final look. So this is done. I think you must have enjoyed the video, the process, and making a beautiful mini bonsai for your gardening space. You might keep it outdoors, you might keep it indoors for some days. So that's how it looks. You can check. उसने अपना खुद का जगह बना लिया है. मेरे पास और भी है. जो भी आर्डन पॉट्स टूट जाते हैं या सिरामिक का, I used to turn them into bonsai planters. So please do try. Please do share your comments and thoughts. जरूर share कीजिएगा. Please write back to us in the comment section. And thank you so much. Stay blessed, stay happy from Kindle. Bye bye.